Hi everyone. In this video, we will discuss the concept of degenerate basic feasible solution. So आपके पास एक प्रॉब्लम दी हुई है and you have to find the optimal solution of this problem by using the UV method. अब degenerate basic feasible solution का केस कब arise होता है? अगर तो आपको कहा हो कि आप बेसिक फिजिबल सोल्यूशन भी फाइंड करिए और ऑप्टिमल सोल्यूशन भी फाइंड आउट करिए, तो उससे तो जो आपका सोल्यूशन आएगा वो डिजेनरेट नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको सोल्यूशन ऑलरेडी दिया हो तो वो डिजेनरेट हो सकता है। अब इसको चेक कैसे करना है? सपोज मैंने u1 को 0 असाइन किया, जो कि हम यूवी मेथड में सबसे पहले करते हैं। सो इसको 0 असाइन करने से v1 की वैल्यू 4 आ जाएगी, v2 की वैल्यू 6 आ जाएगी, u2 की वैल्यू 2 आ जाएगी, u3 की इसके बाद v3 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। अब देखिए, अब हमने ऑब्टेन करे, लेकिन अब हमारे पास कोई ऐसी एलोकेशंस नहीं है जिसकी हेल्प से हम इस u3 और v4 की वैल्यू निकाल पाए। तो मतलब हमें नंबर ऑफ एलोकेशंस जो है, उन नंबर ऑफ एलोकेशन से हम अपने सारे यूआईज एंड वीजेस की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं। सो दिस इज द केस ऑफ डीजेनरेसी। सो हाउ टू डील विद इट? अब इस डीजेनरेसी के केस को रिमूव कैसे करना है? तो इसको रिमूव करने के लिए आप एक एप्सिलॉन एलोकेट करो किसी नॉन एलोकेटेड सेल में। इस तरीके से एलोकेट करो कि वो लूप ना बनाए। सो फॉर एग्जांपल, मैं अगर यहाँ पे एप्सिलॉन एलोकेट कर दूँ, सो इफ आई चेक, ये एप्सिलॉन एलोकेट करने से कोई भी लूप नहीं बन रहा है इसमें। यहाँ पे एक एलोकेशन आ गई। अब इस एलोकेशन की हेल्प से हम u3 और v4 को आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, u3 की वैल्यू अब इस एलोकेशन के बाद आ जाएगी 2, और v4 की जो वैल्यू है इस एलोकेशन के बाद आ जाएगी 6। सो अब हमने ui's और vj's हमारे निकाल लिए हैं by using this epsilon allocation, and now we can proceed with step number 2 of the UV method. So now we have obtained the ui's and vi's for the allocated cell. अब हम नॉन एलोकेटेड सेल्स के लिए निकालेंगे Cij minus ui plus vj, where Cij is the cost of ith row and jth column, ui is the value of ith row, and vj is the value of the jth column. So for example, this is our cell. तो इसके लिए Cij minus ui plus vj की वैल्यू क्या होगी? कॉरेस्पॉन्डिंग कॉस्ट में से इस ui और vj का सम माइनस कर देना है। सो इट इज 4। इसके लिए वैल्यू आ जाएगी 2। For this value is 0, and for this particular cell, this value is minus 1. For this cell, this value is minus 1, and for this cell also, this value is minus 1. So अब देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव जो है ये वैल्यू, वो 3 सेल्स के लिए आ रही है। So हम कहाँ एलोकेशन करते हैं? जहाँ वैल्यू मोस्ट नेगेटिव है। अब मोस्ट नेगेटिव तो -1 है, और वो 3 सेल के लिए आ गई। सो हम किसी भी सेल पे इनमें से एलोकेशन कर सकते हैं जहाँ पे -1 और -1 वैल्यू आ रही है। Now suppose I allocate theta value over here. So if I allocate theta value, now number of allocations are 7, which is greater than n plus n minus 1, and there will exist a loop. So we will start loop at this cell and we will form it. This is theta, this is 10 minus theta, this is 50 plus theta, and this is epsilon minus theta. Epsilon minus theta. तो थीटा की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू एप्सिलॉन हो सकती है, क्योंकि अगर हम एप्सिलॉन से ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ये वाली क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी, बिकॉज एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल हेयर। अगर एप्सिलॉन वेरी स्मॉल है तो थीटा को एप्सिलॉन रखिए तो 10 माइनस थीटा फिर भी पॉजिटिव रहेगा। सो थीटा इज एप्सिलॉन। सो यहाँ पे एप्सिलॉन पुट करेंगे, दिस विल बिकम 0, दिस विल बिकम 10 माइनस एप्सिलॉन, दिस विल बिकम 50 प्लस एप्सिलॉन। सो दीज आर द न्यू वैल्यूज। सो नाउ इफ यू सी, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे एप्सिलॉन आ जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू थी 50
यहाँ थी 10 माइनस एप्सिलॉन, यहाँ थी 50 प्लस एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन क्योंकि बहुत स्मॉल क्वांटिटी है तो 50 प्लस एप्सिलॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 50। सिमिलरली 10 माइनस एप्सिलॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 हम ले लेंगे। So now we will move on to the next step. What is the next step? We will again calculate UIs, VJs for the and using this we will calculate the CIJ minus UI plus VJ for the non-allocated cells. Let us see. So allocating U1 is equal to 0, we get V1 is equal to 4 and we get V2 is equal to 6. Using this we get VU2 is equal to 2. Using this we get V3 is equal to 4 and using this we get U3 is equal to 1 and using this we get V4 is equal to 7. These are the UI values of UIs and VJs and now we will calculate for the non-allocated cells CIJ minus UI plus VJ. Let us calculate this. You will get this equal to 4. This is equal to 1. This is equal to 0 and this is equal to minus 2. This is equal to 0 and this is equal to 1. So this is now the most negative value and we have to allocate here, allocate a theta over here. So यहाँ पे अब हम थीटा को एलोकेट करेंगे। जब थीटा को एलोकेट किया तो नंबर ऑफ एलोकेशंस आ गई हमारे पास 7 which is greater than m plus n minus 1 and this indicates that there exists a loop. So trying to find the loop starting from theta, we go downwards, left, upward and right. This is theta, this is 50 minus theta now. This is epsilon plus theta and this is 10 minus theta. अब थीटा की वैल्यू कैसे निकालनी है? हमें 10 माइनस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए और 50 माइनस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो हम थीटा की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 10 रख सकते हैं। सो थीटा की वैल्यू 10, क्योंकि 10 से बड़ी रखेंगे तो ये 10 माइनस थीटा नेगेटिव हो जाएगा। सो सब्स्टिट्यूट थीटा इज इक्वल टू 10, दिस वैल्यू विल बी 40, दिस वैल्यू विल बी एप्सिलॉन प्लस 10, epsilon plus theta है theta because we are adding and subtracting theta na. So here it will be theta plus epsilon which is 10 plus epsilon. 10 plus epsilon is approximately equal to 10 because epsilon is very small, so this will become 10 and this will become 10 minus 10 0. So these are the new allocations and we will substitute these values. So after allocating new values we will get these particular assignments. Now we will again calculate UIs and VJs. These are the old ones. We will remove them and we will calculate UIs and VJs. And again we will find CIJ minus UI plus VJ. तो यहाँ पे अगर हमने U1 को 0 असाइन किया तो V1 की वैल्यू 4, V2 की वैल्यू 6. Using this we get U3 is equal to 1. Using U3 we get V1 is equal to 7 and using this we get U2 is equal to 0. Using this we get U3 is equal to 6. So these are the UIs and VJs and now we will calculate CIJ minus UI plus VJ for the non-allocated cell. इस सेल के लिए आ जाएगा 2, इस सेल के लिए आ जाएगी वैल्यू 1, इस सेल के लिए वैल्यू आ जाएगी 2, इस सेल के लिए ये वैल्यू आ जाएगी 2. For this cell it is 5 minus 5 0 and for this cell this is 6 minus 1. So this is a negative 1 value. यहाँ पे अब हमें एलोकेशन करनी पड़ेगी. So now let us allocate a theta value over here and see how it proceeds. So after allocating theta value over here, number of allocations are 7 which is greater than m plus n minus 1. So there will exist a loop starting from theta. So try करते हैं उसको find करने के लिए. So it is going right, upward, left and downward. So if it is theta, this is 40 minus theta, this is 10 plus theta and this is 50 minus theta.
माइनस थीटा। सब थीटा की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बढ़ा सकते हैं? थीटा कैन बी 40, क्योंकि 40 से ज़्यादा बढ़ाएंगे सो दिस वैल्यू विल बिकम नेगेटिव. When we substitute theta is equals to 40, this will become 40 and this will become 0, this will become 10 and this will become 50. So the new values are, substituting these new values, here it is 40, here it is 0, here it is 50 and here it is 50 minus 40 is 10. So this is the new solution. Now again we will calculate ui's and vg's using these allocations. We will get we will put u1 is equal to 0, we get v1 is 4, u2 6, and we will get u3 is equal to 1, v3 is equal to 5, u2 is equal to 1, v4 is equal to 7 minus 1 is 6. And for the non-allocated cells, we will again calculate Cij minus ui plus vj. And now if you calculate this, you will get 3, you will get 8 minus 6 2, यहाँ पे मिलेगा 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1. सब सारी एलोकेशंस, ये सारी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है फॉर ऑल द सेल्स. इसका मतलब आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल चुका है, जो कि आप फाइंड कर सकते हो. ऑप्टिमल कॉस्ट इज 4 इंटू 20 प्लस 6 इंटू 20 प्लस 10 इंटू 6 प्लस 7 इंटू 50 प्लस 7 into 10 plus 6 into 40, and this cost will be, you can see that there exists an value 0 over here, तो alternative solution भी exist करेगा, इसको आप find out कर सकते हो. बट आपको एप्सिलॉन से अब छूट मिल गई है, सो आपका डीजेनरेट बेसिक फिजिबल सोल्यूशन एक डीजेनरेट सोल्यूशन नहीं रहा, एंड यू हैव obtained a solution for your problem. This cost will be 920, and this is the minimal cost that you can get. Thank you very much.